अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students, how are you? Hopefully you are all doing well, and I am your computer teacher, and today we will discuss computer class 6, and topic is introduction to computer. So students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्या हैं, द मेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट लाइक मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ड्राइव एक्सेट्रा. सो इसके अलावा हमने भी पढ़ा था what is data and information, and what is the difference between data and information according to the data, according to the information, and according to the raw material. And also we are discussing in the previous lecture what is computer and the introduction of computer, learning outcomes at the end of this chapter. So computer is a electronic machine that help us in our daily life. In this previous lecture, all the students learn the different components of system unit and the advantages of a computer and definition of computer, data and information, and the difference between data and information. They will also learn about input, processing, output, storage devices, and operations. So what is a computer? When someone says that word computer, so you may think of a machine that look like a TV, okay? And a computer is an electronic machine which process raw data in like input, and then after processing according to the given instructions, according to the given content, into the meaningful information like output, and also stores output for later use, and it also always performs according to the given instructions. And so what is the data and information? A collection of facts, figures, unprocessed items is called data, and it can be in the form of text, number, audio, video, and the data after processing is called information, and information is a meaningful information is a basically a meaningful data and meaningful information, a meaningful information that easily understandable by students, by people, by anyone. And the processing is very important, and they connect with input and output, and the processing is an action which computer converts into the data into the information. And also we are discussing data is a processed into information by a computer, like in the example of student's name, address, subject, marks obtained in each subject represent data, and the computer process of this data and turn it into information in the form of the grade, in the form of result, in the form of
grade certificate. The certificate, the grade, the total marks is called information is called output, and the each subject's number like physics, chemistry, biomass marks are called data. And after data processed करने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल वे में मिलती है उसे हम हमने पढ़ना है वो है इनपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद वन अनदर, दे परफॉर्म डिफरेंट टास्क. So devices that are used to enter data into a computer, that is called input devices, and the used input devices are the keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera, etc. These are all are called input devices. The first one is keyboard. You know very well, keyboard is the most commonly used input devices, and it allow a user to type alphabets, numbers, symbols into the computer, and it has a small buttons called keys. The keys are laid out in the different pattern. Now look at the keyboard again, or the letters on the top of the keyboard and the left of the keyboard. The function keys are the top of the keyboard, and the number like 1 2 3 4 are the second bar on the keyboard, and the alphabets and all are these. And a standard keyboard can be divided into following sections. Function key, the second one is alphanumeric keys, third one is numeric keypad, and last one is cursor control keys. जो हमारी कीबोर्ड होता है उसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. इसका जो फर्स्ट फंक्शंस कीज़ का F1, F2, F3 जो होती हैं उनको हम कहते हैं फंक्शंस कीज़, और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ होती हैं. सेम एज इट इज़ इसी तरह अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z होते हैं, जो हम अपने टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज़ कर्सर कंट्रोल कीज़. जो हमारा कर्सर होता है, जो हमें अपने मॉनिटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए 4 कीज़ होती हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट, जिसको हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़. एंड द लास्ट वन इज़ न्यूमेरिक कीबोर्ड, जिसमें नंबर होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6. इसमें हम अपनी कैलकुलेशन के लिए, अपने नंबर्स को ऐड करने के लिए, अपना मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन को ऐड करने के लिए हम न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करते हैं. सो a keyboard can be divided into 4 parts. The first one is function key, the second one is alphanumeric keys, and third one numeric keypad like 1 2 numeric numbers, and the last one is cursor control like 4 keys, up, down and left, right. And the different keys perform different tasks. And the function keys are located at the top of the keyboard like this, top of the keyboard, and the purpose of these keys is based on the software we are using. For example, pressing in the F1 key open the help screen in Windows. जो फंक्शन कीज़ होती हैं वो कीबोर्ड की टॉप पर होती हैं, और इनका पर्पस जो होता है वो डिफरेंट होता है, और इसको डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी F1 होती है वो क्या करती है, ओपन करती है हेल्प स्क्रीन इन विंडोज़. इसी तरह F1, F2, F3 के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो जो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करती हैं. इसके बाद सेकंड 2 है सेकंड alphanumeric keys. Alphanumeric keys are the collection of letters, number and punctuation keys. This section also included some special keys, the tab, the caps lock, backspace, enter, shift, control and all others. जो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ होती हैं उसमें डिफरेंट कलेक्शंस होती है, लेटर्स की, नंबर्स की, पंक्चुएशंस की. उसके लिए हम लोग टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, इंटर, शिफ्ट कीज़, ये तमाम जो होती हैं वो अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के अंदर आती हैं.
इसी तरह जो थर्ड वन है वो है न्यूमेरिक कीपैड. The numeric keypad is usually located on the right side of the standard keyboard. जो हमारा कीबोर्ड होता है उसके राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड जो होती हैं यानी कीज़ होती हैं वो लोकेटेड होती हैं. एंड दिस सेक्शन कंटेन्स डिजिट कीज़ एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कीज़ लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके साथ होती हैं जो कि डिफरेंट प्लस माइनस या मल्टीप्लाई के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आप इन कीज़ को यूज़ कर सकते हैं. एंड देन लास्ट वन इज़ कर्सर कंट्रोल. जो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कीज़ यूज़ होती हैं और ये कंसिस्ट ऑफ एरो कीज़ इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप पेज डाउन पेज लेफ्ट राइट ऑल आर cursor control keys and these keys are used to move cursor within the next text with one place to another place to move the cursor. सो कर्सर जो कीज़ होती हैं उसमें कौन कौन सी कीज़ आती हैं. एरो कीज़ आती है, इंसर्ट आती है, डिलीट, होम एंड पेज अप पेज डाउन लेफ़्ट राइट. ये तमाम कीज़ जो होती हैं ये कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती हैं जो मोस्टली हम अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं और अपने कर्सर को अपने डिस्प्ले के ऊपर अपने स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए हम भी कर्सर कंट्रोल कीज़ को यूज़ करते हैं. And the next one is important keys and their functions. Like जो important keys होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके कौन कौन से functions हैं. The first one is key is tab. The function is tab key is left you move the cursor more than one space at a time. And the next one is delete. Delete key is used to delete a letter or a number and specific yes type incorrectly. The third one is ESC cap is used to terminate any process in between. And the fourth one is backspace key. Backspace key is used to delete and adds a letter to a number on to the left of the cursor. And the fifth one is caps lock. The press the caps lock key when you want to write a word in कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं देन आप कैपिटल लेटर्स को टाइप कर सकते हैं. और इसके लिए एक जब आप टाइप करते हैं तो आपको एक वहाँ पे स्क्रीन पे शो भी होगी. जब वो ओपन होगी देन जब ऑफ होगी तब भी आपको वहाँ पे शो होगी. द नेक्स्ट वन इज़ होम. होम की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और screen. And the second one is these keys do not work on their own. They are used in combination with one another. And for example control plus O used in open a file and is same as it is alt plus F1 close any program like any window you want. And the next one is end. The end key moves the cursor to the end of the line or to the end of the screen. And the second last one is enter key is used. The most enter key is used to start a new line to execute a command. And the last one is shift key. And shift key are used to there are two keys are in the keyboard and they are used in to type the capital letters and to type symbols. So these are all the important keys and their functions. And the next topic is mouse. The mouse is an input device that enable a user to select commands quickly and perform tasks. It has sometimes 3 buttons to click on. जो माउस है वो हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जिसके थ्रू हम अपने डाटा को अपनी इंफॉर्मेशन को अपने टेक्स्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं यानी इनपुट करते हैं. तो उसमें एक हमारी जो डिवाइस है वो माउस है जिसकी मोस्टली 3 बटन्स भी होते हैं और किसी जो माउस होता है उसमें 2 भी होते हैं. अब वो बटन कौन से हैं और उनका टास्क क्या है उनका वर्क क्या है और वो कैसे वर्क को परफॉर्म करते हैं. एज द माउस मूव द एरो ऑन द स्क्रीन विल मूव एट द सेम टाइम. दिस एरो इज़ कॉल्ड द माउस पॉइंटर.
माउस पॉइंटर एक है जिसके जो एरो है जिसके ज़रिए माउस मूव करता है, एरो इन द स्क्रीन पे, एंड विल मूव एट द सेम टाइम. And the next mouse action, quickly pressing and releasing the mouse button once is called a click. Clicking on the left mouse button you will highlight the icon, and the clicking on the right mouse button will display a shortcut or quick menu. एंड द नेक्स्ट वन इज़ डबल क्लिकिंग. अब डबल क्लिकिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं, क्विकली प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्विस्ट इज़ कॉल्ड डबल क्लिक. जब हम लेफ़्ट माउस के बटन को 2 टाइम क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उसको कहते हैं डबल क्लिक. And this method is used to open a folder or run a program. इस मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी भी फोल्डर को, फाइल को, किसी प्रोग्राम को, किसी विंडो को ओपन करने के लिए. हम किसी भी जब फाइल या फोल्डर के ऊपर जाके अपने माउस को रखते हैं और उसके कर्सर को जब डबल क्लिक करते हैं तो वहाँ ओपन का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप अपने प्रोग्राम को, अपने फाइल को, अपने फोल्डर को ओपन करते हैं. सेम इसका नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रैगिंग. टू प्रेस एंड कंटिन्यू टू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस इज कॉल्ड ड्रैगिंग. जब प्रेस करते हैं या कंटिन्यू होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, जब हम उसको होल्ड डाउन करते हैं एंड मूव करवाते हैं माउस को, तो इसको हम कहते हैं ड्रैगिंग. And the next topic is software. A computer cannot perform a task with hardware alone. So software and hardware are connected to each other and are connected with one another because it needs software too. And software is the set of instructions given to the computer to perform a specific task. For example, the game we play and the programs we run a computer, same as it is Windows, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, and also our software. They are connected with one another and they are very important part of the computer system. And the next topic is difference between hardware and software. We will discuss what is the difference between hardware and software, and what is the purpose of hardware and what is the purpose of software. Following table that describes some differences between hardware and software. The first one is hardware and the second one is software. Hardware is refer to all physical parts of a computer that we can see and touch, and same as it is the software is the set of instruction given to the computer to perform a specific task. The hardware is a physical part of the computer, physical part of the hardware, and the software is the instructions is the set of instructions given to the computer to perform different tasks according to the instruction. And the second one is hardware is like a human body and the software is like a human soul. And the next one is hardware. Some examples of hardware are monitor, keyboard, mouse, printer, system unit, scanner, motherboard, speaker. That all are physical parts of the computer. So software, some examples of software are Microsoft Windows, MS Word, MS PowerPoint, media player, internet. These are all set of instructions given to the computer to perform a different task, according to the instructions, according to the content. So this is all the difference between hardware and software. आज हमने इसकी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर की डिवाइसेस कौन सी हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर के कौन कौन से मेन स्पेसिफिक टास्क हैं, कौन कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने पढ़ा, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और इनको अच्छी तरह से समझेंगे. तब तक अपने इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. अल्लाह हाफिज़.
And the next topic is components of a computer. So, the main components of the system unit of a computer are different, like motherboard, power supply, storage memory, RAM, ROM, microprocessor, hard disk. A system unit is the case that contains all the electronic machine, all the electronic components of a computer, because computer is an electronic machine. So, all the electronic components of a computer system, like motherboard, power supply, RAM, ROM, hard disk, etc. And the most important part of the computer are central processing unit, that is called brain of the computer. And also important, the main part of the computer is motherboard, and the motherboard is the printed circuit board found in general purpose computer which serve different tasks, and the motherboard is mounted inside the case, and its security attached with small ports and small holes. Motherboard carries a number of different number of ports to connected monitor, printer, hardware, hard disk, and soft disk, drives, like this show in picture computer hardware. So a computer has different components to perform a different task according to the instructions, according to the given instructions. So hardware and software are the main components of a computer. First one is hardware. Hardware refers to all physical parts of a computer that we can see and touch. So hardware is a physical parts, and we can see, touch. This includes the input and output devices as well as the system units, show in figure 1. And the next one is scanner. Scanner is also an input device, and it is used to scan the text and images into the computer. Once a document or picture is scanned, it can be displayed on the screen of the computer, and also it works like a photocopy machine, and it creates a copy of documents or image in the computer. Scanner is connected with the computer, and the scanner is the connected with the central processing unit like CPU. And scanner is also an input device, and it is used to scan the text, scan the documents, scan the images, and all though स्कैनर जो होता है वो कंप्यूटर, पिक्चर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के यूज़ करते हैं, और ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह वर्क करता है। और इसको हम जब यूज़ करते हैं तो अपने पीसी के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं इसके वायर को, देन ही ये अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करता है। And the next one is digital camera. Digital camera also as an input device. It is very important in nowadays in technology time. It allow a user to take pictures and make a video and store them into the computer instead of traditional film, and in connected and attached with different files, like different memory cards are used in this digital camera, and you can see a picture on the screen of the camera, and you can see a video on the screen of the camera. Digital camera have built in the memory to store the images, and digital camera provides a different features to delete and edit an image after taking in. So you can view the picture on the LCD of your digital camera. You can taking pictures, sending pictures to a computer, and to receiving the pictures to the computer. So digital camera is very important and an input devices. So it allows us user to take different pictures, and it allows user to take different make and take the different videos, different movies. So and then the digital camera store them into the computer instead of traditional movies and film. And then you can see a picture, you can see a video, you can see the film on the screen of the digital camera.
So digital camera is the important input device of the computer system. And the next one is microphone. We will discuss microphone. Microphone is an also input device, and it is used to input audio in the computer, and we can record voice, we can record different voices using microphone in the computer. And microphone are used to make audio and video call and chat over the internet. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने माइक्रोफोन और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे, और आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, इसको समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।